जी की श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री
साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। He not only looked upon Arunachala as his father, he also looked upon it as his beloved. He was putting himself into the role of a woman, a bride, and the Arunachala was the bridegroom. The Arunachala Padikam, the marital garland of letters, read. There, Arunachala was not the father, not the Sadguru, not God, but his beloved. And he was the female, and the Arunachala was the male. Why? He has to put himself in the role of a bride. It's the same role we are all putting ourselves when we use the image of the beloved. Why we have to look upon the Sadguru as the beloved? Because it is love is the feeling that unites us. No? It can be a father, it can be a daughter, and he is the father, or he is the sister and he is the brother, or he is a female devotee and he is a male Sadguru,
Why he is a bride and bridegroom? Why this imaginary that the bride and the bridegroom is coming? There it is not carnal, it's not physical. When it comes to something magnanimous, or something great, and something he wants to merge in, he takes up one role. But on another occasion he said, I am the son of Arunachala. In another occasion he said he was a devotee. Not that he always put it like that. But this was the dominant spontaneous expression. And that is the spontaneous integrity. There it is not the question of the gender, whether it is a woman or a man. For everybody, that principle is considered to be the male principle. And what is going to be merged there is considered to be the female. When it comes to human imagery, it's all like that. It's not actually the gender. In one of the Vaishnava schools, it is considered that Krishna is the only male and the whole universe is a part of the nature of the Prakriti or woman. And Vallabhacharya, one of the great acharyas. Have you heard of Vallabhacharya? Vallabhacharya. He is considered to be the fourth in the order. Shankara, Ramanuja, Madhva and Vallabha. He has got great following. And Vallabhacharya used to, it's called Pushti Marga. It's a path. It's a school. And he was so vehement about that he never used to see women at all. Because he started to follow asceticism as a sannyasi. Even to look upon a woman, he used to shun. So he never gave any audience to any woman. A story goes that one day Mirabai was touring and she came to the ashram of Vallabhacharya and she wanted to take darshan of Vallabhacharya. And when she sent word that Mirabai wanted to take darshan of the Acharya, the attendant said that the Acharya doesn't see woman at all. Then spontaneously Mirabai exclaimed, oh, is there any other man except Krishna? Understand? Then this attendant went to Acharya and said, one woman came and I told him that like this, and she replied like this. And immediately Acharya came out and then he took her inside. For Mirabai, there was no other man at all. She was not considering Acharya as a man, and she was exclaiming, she was surprised that Acharya was looking at her as a woman, and he a man. Here, what is that masculine and feminine principle? Some completeness is lacking, and the experience of lacking is considered the feminine principle. The completeness, the state of fulfillment, is considered to be the male. So, in order to complete ourselves, the male and the female is here. So, we identify ourselves with the female. And the one which fulfills is the fulfillment, the state of fulfillment, is considered to be the masculine. This is the human imagery that is given. And it doesn't have any connotations of carnal sex or gender and these things. If you really understand that in the saints, then Sai Baba also used to tie anklets and then he used to dance, singing on God as his beloved, and he is the female. Sometimes identifying himself with the Radha, the Gopika. He used to behave exactly like a woman. But then he will sing and dance also. If you understand it subtly, then you understand this is the principle. The incompleteness, the condition, the hollowness
with which that we identify is the female principle. And that gives way to the fulfilling experience that is considered to be the way. That is the human imagination. And Ramana also expressed in the same way. And when it comes to poetry, it is expressed more. ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది సార్. ఎన్నో ఆలోచనలు ఈ వాటి నుంచి చాలా కరెక్ట్ అయిన మార్గం అడుగుదాం అని ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు అనిపిస్తుంది సార్. ముఖ్యంగా మీ సన్నిధిలో అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ అడిగిపోగానే చదువు మళ్ళీ స్టార్ట్ మీ ఎదురుగా ఉన్నంత కుదిరికగా అట్లా మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళిపోగానే అది చాలా పక్కన పడిపోతుంది సార్. అభిప్రాయం కానివ్వండి, పట్టుదల కానివ్వండి, అన్నీ ఎట్లా అయిపోతుంది. కూతురాని సేపు బోర్డులంతా పట్టుదల ఉంటుంది. వెళ్ళిపోగానే మనసు గడ్డ కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఫ్రీక్వెంట్గా షిరిడీకి రావటం, కూర్చోవటం చేస్తుంటే నెమ్మదిగా అలవాటు అవుతుంది. కొంచెం చపలత్వం తగ్గుతుంది. అంటారు ఎవరికైనా అదే. ఎందుకు రావాలి? అది కూడా రాసుకుని సాయిభక్తి సాధనలో ఎందుకు షిరిడీకి రావాలి? కోసంగానే రావాలి. షిరిడీలో ఉన్నంతకాలం మనసు బాగుంటుంది. మళ్ళీ పోగానే మళ్ళీ చపలం అవుతుంది. మళ్ళీ పొయ్యి కొద్ది చపలం లేకుండా అచంచలంగా ఉండేటువంటి అలవాటుని పెంచుతుంది. పోయే కొద్ది అది వీకెన్ అయ్యి ఇది బలపడుతుంది. అట్లా కాకుండా కానీ ఉంటే అది ఎక్కువ అలవాటు. ఆ మధ్యలో రాలేనటువంటి మనకుండే ప్రాపంచికమైన బంధాల వల్ల, బాధ్యతల వల్ల మనం రాలేనటువంటి, నిజంగా రాలేనటువంటి, హానెస్ట్గా రాలేనటువంటి సందర్భాల్లో మనం బాబా స్మరణలో ఉంటూ బాబాకి దగ్గర చేసేటువంటి మార్గం మాత్రమే సత్సంగం. చాలా భావాలు ఉంటాయి సార్, ఎన్నో అని ఉంటాయి. ఒక్కటి ఉండదు మళ్ళీ. ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది సార్ మళ్ళీ. దాని పరిష్కారం అదే. నేను మీ వద్ద మీకు 4 ఏళ్ల నుంచి మీకు చెప్తున్నది కూడా అదే. మీరు అదే చేయటం. ఇది చేయకపోవడానికి 100 రీజన్స్ కనిపిస్తాయి మనకు. సాకులు తిక్కోవటం మొదలు పెట్టుకుందంటే మనసుకు మించిన ఇది లేదు. ఇంటి సాకులు తిక్కోవటం మొదలు పెడితే మాత్రం వెతుక్కుంటాడు. ఇదే బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటారు. అట్లా తీర్చిదిద్దడానికి ఆశ్చర్యం. అట్లయితే అది మీ వల్ల కావాల్సిందే కానీ నా కూడా వాడు చేయలేదు. మీరు చేయాల్సిందే. కొన్ని దెబ్బలు కొట్టైనా సరే మీరు చేయాల్సిందే తప్ప ఏది కావాలి. ఏదో మొత్తం మీద ఒక అడ్డు అనేది అది మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా మీరు చేస్తారు. నా ప్రయత్నంలో ఏం కాదు, ఫెయిల్ అయ్యాను నేను. మీరు అన్నట్టు ఏదో సాకి వెతుక్కుంటూ కూర్చుంటాను. ఎప్పుడు లేని ఈ మధ్యకాలంలో అయితే కొంచెం ప్రయాణం చేయలేనేమో అనే ఒక మొట్టమొదటి ఇట్లాగే స్టార్ట్ అవుతాయి. వెతుక్కుంటాం. ఇదివరకు లేదు సార్, ఈ మధ్యకాలంలో బాగా బయలుదేరింది. ఏం చెప్పేది? ముందు వెతుక్కుంటాం. వెతుక్కొని తీసుకొచ్చి మా మనసులో పెట్టి సాక్కుంటాం. అట్లా సాక్కుండేవే సాకులు అంటే.
Baba
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ नुसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय।
नवसफिटता शीघ्रगती दोघे पातले शिर्डी प्रति येताच साई दर्शना निघते परमप्रीती सोत्कंठ आधी जैसी मनाची आवडी तैशाच पाऊले निघाले तांतडी पातले काकाजी गोदे थडे जेथुनी शिर्डी सन्निध पुजारी वंदी बाबांचे चरण करीत सजल नयनी स्नपन होनी दर्शन सुख संपन्न चित्त प्रसन्न जाहले देवीचा दृष्टांत होता यदर्थ दृष्टी देखता ते बाबा समर्थ काकाजी सुखावले यथार्थ पुरला मनोरथ तयांचा असो काकाजी सुख संपन्न दर्शन सेवेने चित्त प्रसन्न जाहले खरेच निश्चिंत मन कृपा घन वर्षने हरपले मनाचे चंचलपन स्वये जहाले विस्मयापन्न आपणासची पुसती आपण काय विलक्षण ही करणी नाही काही वदले वचन नाही प्रश्न समाधान नाही दिधले आशीर्वचन केवळ दर्शन सुखदायी माझी चंचल चित्तवृत्ती केवळ दर्शने पावली निवृत्ती लाधली अलौकिक सुख संवित्ती दर्शन महती या नाव साई पायी जडली दृष्टी तेने वाचेस पडली मिठी करणी परिसता बाबांच्या गोष्टी आनंद पोटी न समाय उपाधे बुवा निज भावेसी शरण गेले समर्थांसी पावते झाले निज सुखासी विसरले वृत्तीसी पुरविला ऐसे काकाजी 12 दिवस राहते झाले तै शिरडेस होनी आसु स्थिर मानस सप्तशृंगीस परतले स्वप्नासही लागे काळ उषः काळ वा प्रातः काळ तेव्हा जी पडती ती तीच सफळ स्वप्ने निर्फळ तदितर ऐसी सार्वत्रिक प्रसिद्धी परिया शिर्डीच्या स्वप्नांची सिद्धी पडोत ती कुठे आणि कधी भक्ता अबाधित अनुभव ये अर्थींची अल्पवारता सादर करीतो श्रोतयांकरिता कौतुक वाटेल परमचित्ता श्रवणोल्लासता वाढेला 2 प्रहरी एके दिवशी बाबा वदती दीक्षितांपाशी टांगा घेऊन जा राहत्यासी खुशाल भाऊंसी घेऊन ये जाहले की दिवस बहुत भेटावयाची मनी आरत म्हणावे बाबांनी तुम्हा प्रत भेटी प्रित्यर्थ बोलाविले करोनिया आज्ञाभिवंदन दीक्षित गेले टांगा घेऊन खुशाल भाऊ भेटले तक्षण निवेदिले प्रयोजन आगमनाचे ऐकोनिया बाबांचा निरोप खुशाल भाऊंस आश्चर्य अमूप म्हणती हाच उठलो घेऊन झोप झोपेत ज्ञापित हेंचे मजा आताच मी दुपारा जेवणी करीत असता आरामशयनी डोळ्यांचा डोळा लागता क्षणी बाबा ही स्वप्नी हेच वदत म्हणाले आताच शिर्डीस चल माझी ही इच्छा जागली प्रबळ करू काय घोडेन जवळ मुलास कळवाया धाडिले मुलगा वेशीच्या बाहेर पडला तोच हा आपुला टांगा आला दीक्षित विनोदे म्हणती तयांला तदर्थची मजला आज्ञापिले आता स्वये येत असला तर टांगा बाहेर आहे तयार मग ते शिर्डीस आनंद निर्भर दीक्षितांबरोबर पातले तात्पर्य खुशाल भाऊ भेटले बाबांचेही मनोरथ पुरले खुशाल भाऊ ही बहु गहिवरले पाहुन या लीलेस बाबांच्या एकदा एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल नामाधान मुंबई मध्ये वसता जान बाबांनी स्वप्न दिले तया 1.5 वायू रवी वरुणादी देवता यांच्या अनुग्रहाची या सत्ता बाह्यांतःकरण विषय ग्राहकता जागरितता त्या नाव विरमेजव सकल इंद्रियगण होई जाग्रत संस्कार प्रबोधन ग्राह्य ग्राहक रूपे स्फुरण असे हे लक्षण स्वप्नाचे त्याचे स्वप्न तो विलक्षण ठावेन बाबांचे रूप लक्षण पूर्वी कधी नाही दर्शन मजकडे येऊन जा म्हणत आकृतीवरून दिसले महंत परिन ठावे ते कोठे वसत रामलाल होऊन जागृत विचाराकुलित जाहला जावे ऐसे वाटले मना पत्ता नाही ठाव ठिकाणा परी जो तयासी बोलावी दर्शना तयाची रचना तो जाणे मग तेच दुसरे दिवशी दुपारी
सहज रस्त्याने मारिता फेरी छबी एके दुकानावरी पाहुनी अंतरे चमकला. स्वप्नी जे रूप दिसले तयाला तेच ते गमले रामलालाला. विचारपूस कराया लागला दुकानदाराला तात्काळ. लक्ष पाहून छबी पाहे कोण कोठील आहे तो होय. कळता हा साई शिर्डीत आहे स्वस्त राहे रामलाल. पुढील पत्ता पुढे लागला रामलाल शिर्डीस गेला. बाबांची या निर्वाण काला पर्यंत राहिला त्यांपाशी. आपुल्या भक्तांचे पुरवावे हेत आनावे तयांस दर्शनार्थ. पुरवावे स्वार्थ वा परमार्थ हेची मनोरथ बाबांचे. नातरी ते अवाप्त काम स्वये सर्वदा निष्काम. निस्वार्थ निरहंकार निर्मम भक्त कामैक अवतार. क्रोध ज्याचा घेईन वारा द्वेषास जेथे न लाभे थारा. डोळा न देखे जो उदर भरा साधू खरा तो समजावा. सर्वांठाई प्रेम निस्वार्थ हाच ज्याचा परमपुरुषार्थ. वेची न धर्म विषया व्यतिरिक्त वाचाही व्यर्थ पळभरी. सारांश माझा धरुणी हात लिहून घेता हे निजचरित. भक्ती व्हावे निज स्मरणरत हेची की इंगित येथेल. म्हणून हे माड अतिविनीत नित्य श्रोतया हेची उनवीत. हो निश्रद्धा भक्ती समन्वित साई सच्चरित परिसावे. तेने मनास होईल शांती उपजेल व्यसन मगना उपरती. जडेल साई चरणी भक्ती भवनिर्मुक्ती दायक. असो पुढील अध्यायी आता संन्यासी विजयानंदाची कथा. जयास मानसरासी जाता लाधली निर्मुक्तता निजपदी. भक्त मानकर बाळाराम तयाही तैसाच दिसला विश्राम. तोच नुलकर मेघांचा काम पूर्वी प्रकाम साईनाथ. व्याघ्रा सारखा क्रूर प्राणी तयाही दिधला ठाव चरणी. ऐसी अगाध साईंची करणी श्रवणा पर्वणी महोत्सव. स्वस्ती श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हे माड पंत विरचिते. श्री साई समर्थ सच्चरिते नवसादी कथा कथनम नाम त्रिशतमोऽध्यायः संपूर्णः. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि सरद बाबूजी की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि साई बाबा 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 साई बाबा
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Baba, Sai 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 Baba,
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनीश्वर बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai
Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Sadguru Sri Sainath Nisharat Babuji Ki Jai. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Sadguru Sri Sainath Nisharat Babuji Ki Jai. Sai Baba, 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 Sai Baba,
Baba, Sai 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 Baba,
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनी शरद बाबू जी की जय। नजर करना, बच्चों का पालन करना, नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पकारा, सभी झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पकारा, सभी झूठ जमाना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैया बंदा आपका मुझसे पद दिखलाना। मैया बंदा आपका मुझसे पद दिखलाना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। कहो नजर करो अब मोरे साई, तुम्हारी राही मुझे बाप भाई। कहो नजर करो बंदा तुम्हारा। बंदा तुम्हारा, मेरा जानो, मेरा जानो, मेरा जानो। अल्लाह इलाही नजर करो, नजर करो अब मोरे साई। हमारे नहीं मुझे बाबा भाई। नजर करो खाली जमाना, बलीरे गवाया। काले जमाना बलीने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का। तुम बिना कोई नजर करो, नजर करो अब मोरे साई। तुम्हारी नहीं मुझे बाप भाई। नजर करो अपने मस्जिद का, झाड़ू है अपने मस्जिद का, झाड़ू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे। तुम बाबा साई। नजर करो, नजर करो अब मोरे साई। तुम्हारी नहीं मुझे बाबा भाई। नजर करो। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ बाबू जी की जय।
Thank you.